Hello everyone, welcome to this platform with a new name, Math Panda. In this video lecture, we will study about the chapter circle. Okay, we will focus the circle, the part of circle that is given in class 10 syllabus. Okay, so as per ncert class 10 syllabus, whatever be there in the circle chapter, we will discuss in detail about that. And for that, for first few minutes, we will discuss whatever be its primary or previous knowledge that is already studied in class 9. Okay, so we will just touch upon the concepts of class 9th and we will go deep into the circle of class 10 syllabus. Okay, so in this video we will communicate in Odia and English language. So this video will be a bilingual one, Odia and English. आउ ए भिडियोटा कहा पाई सुइटेबल ए भिडियोटा क्लास 10th रे जो माने बे पढुचंती तांको पाई ए भिडियोटा सुइटेबल आउ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे हमर स्पेशली ओडिसा रे टीजीटी एग्जाम हला पीजीटी हला किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हला जो थिरे क्लास 10th लेवल रो सर्किल चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन आसुची तांको पाई भी ए भिडियोटा गोटे प्रकार सुइटेबल हेई पारे। ठीक अछि, तो हमें स्टार्ट करिवा हमर क्लास 9 रे कोन हमें पढितिले ताकू नै कि हमें स्टार्ट करिवा आउ धीरे धीरे हमें क्लास 10th रो सिलेबस को टच करिवा। सो व्हाट डू वी ऑलरेडी नो, आपण माने देखुथिबे एठी किछिटा फिगर्स अछि, किछि फोटो अछि। तो हियर इन दिस फर्स्ट थिंग, हियर इट इज ए क्लॉक, it is a fan, here it is a tire, it is also another clock is there and a wheel is there. आमे जदि एई सब चारि पांचटा जदि आमे फोटो को देखिबा आमे कोन ऑब्जर्व करूछि किछि सिमिलरिटी अछि कि? Yes, there is a similarity that you can say. What type of similarity? We can say that all of these figures have the same shape. And what is the name of this shape? In general, in our general term, we say that these are round shaped figures, or we also say circular figures or circle related figures. तो आमे ए वीडियो रे देखिबा फर्स्ट जे सर्किल हम कहा को कहूची। तो ए वीडियो रे आमे देखिबा जे सर्किल हम कहा को कहूची, माने जेमति हमर ट्रायंगल हे गला, क्वाड्रिलेटरल हे गला कि अन्य किछि पॉलीगन हे गला, तार किछि ना किछि गोटे डेफिनेशन रहूची। जेमति कि क्वाड्रिलेटरल हा जहार चारटा साइड अछि ताको हम क्वाड्रिलेटरल कहूची। तो सेमति सर्किल रो कोन सेमति डेफिनेशन अछि, किछि डिफाइनिंग फीचर अछि कि जोटा को कि आमे नेकी कहि परिबा जे दिस पर्टिकुलर फिगर इज नोन एज ए सर्किल। ओके, सो आमे देखिबा जे हाउ कैन वी डिफाइन ए सर्किल। एठी देखंतु गोटे व्हील रो चित्र अछि, दिस इज ए व्हील। ए व्हील रे कोन अछि, एटा जो बाहरे अछि एटा हला तार आउटलाइन, एटा हला तार कोन बाउंड्री। तो ए जो बाउंड्री टा कोन हमर बहुत गुडे एमती पॉइंट को नै कि कनेक्ट हे कि बाउंड्री गोटे क्रिएट हिची, माने बहुत गुडे पॉइंट थाई पारे एठी, हां कि नै सब पॉइंट माने मिसी करी गोटे कंटीन्यूअस कर्व, गोटे कंटीन्यूअस क्लोज्ड कर्व क्रिएट करू जे एटा। तो ए जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट अछि याकू नै कि हमें कोन करबा सर्किल रो डेफिनेशन हमें देबा। केमती डिफाइन करबा गोटे सर्किल। देखो एटा बाउंड्री रे पॉइंट गुडा जोटा अछि, जोटा को मु एबे देखिले रेड कलर रे मार्क कर दिली, ए गुडा एमते सब आडे गोटे गोटे पॉइंट अछि बाउंड्री पॉइंट्स माने। तो ए पॉइंट्स को देखिबा आ मझी रे देखंतु एटा गोटे सर्कुलर, माने एटा गोटे भाबी नंतु तार सेंटर पार्ट, एटा हला सेंटर। आ सेंटर को बाउंड्री पॉइंट सहित लिंक करूची किछि किछि लाइन सेगमेंट हला, देखि पारदे किछि किछि लाइन सेगमेंट। एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट all the line segment that are connecting the center with the boundary points are having the same length रो से माने सब अछंती। तो हमको डिफाइन करबा पे गोटे सर्किल हमको कोन दरकार, से मझी रो सेंटर दरकार आउ सही लेंथ दरकार जोटा कोन करूची बाउंड्री पॉइंट्स को
कहा सहित कनेक्ट करूची सेंटर सहित कनेक्ट करूची तो आमे लिखि परिबा जे a circle is the collection of points that are at a fixed distance from a fixed point तो ये फिक्स्ड पॉइंट कौन फिक्स्ड पॉइंट है ए सेंटर तो आम फिक्स्ड पॉइंट क्या कहवा फिक्स्ड पॉइंट को कौन कहवा फिक्स्ड पॉइंट को आम कहवा सेंटर ऑफ द सर्किल सेमती एटा जो फिक्स्ड डिस्टेंस अच्छी दीज आर कॉल्ड रेडियस ठीक अच्छे या आम कहूचे रेडियस सो व्हाट इज ए सर्किल इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ये जो बाउंड्री पॉइंट्स माने अच्छी these points make a circle how can they make a circle if they are present at a fixed distance that is called radius from a fixed point that is called center okay so this is the formal definition of a circle ठीक अछि एबे हमें देखिबा गोटे सर्किल रो कोन कोन पार्ट अछि that we have already studied in class 9 आमे खाली ताकू रिवाइज करबा देखंतु पार्ट्स ऑफ सर्किल तो फर्स्ट फिगर रे देखि पारिबे एटा धरनियंतु दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल मो नेम दे देली याकू ओ ए सेंटर रु एटी धरनियंतु एठी गोटे पॉइंट अछि पी बाउंड्री रे गोटे पॉइंट अछि पी तो ए बाउंड्री पॉइंट को ए जो सेंटर कनेक्ट करूची ए लाइन सेगमेंटा दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द रेडियस आर हला जदी मु एठी गोटे पॉइंट ले जिबी लेट दिस पॉइंट इज क्यू एठी गोटे पॉइंट रहि गला दिस पॉइंट इज क्यू मु सेंटर ओ रो जदी क्यू को कनेक्ट करिवि ओ क्यू दिस विल आल्सो बी ए रेडियस बुझेला सो एनी पॉइंट यू टेक ऑन द बाउंड्री लाइन एंड कनेक्ट इट विथ द सेंटर यू विल गेट द लाइन सेगमेंट दैट इज कॉल्ड द रेडियस ओके सो एटा हला रेडियस तापर हमें सेकंड देखिबा ए फिगर को देखंतु एठी अछि कॉर्ड लिखा है कॉर्ड माने कोन देखंतु एटा जो गोटे सर्किल अछि रेड कलर रे आ मझी रे ब्लैक कलर रे गोटे लाइन सेगमेंट अछि ठीक अछि लाइन सेगमेंट रो एंड पॉइंट रे गोटे बाउंड्री पॉइंट अछि आ ए एंड रे गोटे बाउंड्री पॉइंट अछि ए दी पॉइंट को जो कनेक्ट करूची ए ब्लैक कलर रो आपनकर लाइन सेगमेंट ताकू कहूजे हमें कॉर्ड दैट मींस व्हाट इज ए कॉर्ड A chord is a line segment that connects any two points on the boundary of the circle. जेमति कि एठी जदी गुटे मो पॉइंट नै जिवि पॉइंट ए एठी देखंतु दिस इज सपोज पॉइंट ए आउ एठी भी नै गले मो गुटे पॉइंट एटा हला पॉइंट बी आउ ए पॉइंट ए रो जदी बी को मो एमति कनेक्ट करबी तो ए बी ही जिवो कोन AB is also a chord ठीक अछि तो आमे केतेटा chord ड्रा करि परबा गोटे सर्किल रे we can draw infinitely many chords आमे कोनसी दुईटा पॉइंट नै जिबा गोटे सर्किल रे आ ताकू जदी कनेक्ट करबा ताकू कहबा आमे गोटे chord ओके सो chord is any line segment that connects any two points on the boundary line of a circle ठीक अछि नेक्स्ट एपोटे देखंतु दिस इज ए डायमीटर कोन देई जे एठी डायमीटर लिखा है एटा डायमीटर लिखा है डायमीटर माने कोन देखंतु सही कॉर्ड भलिया ही अछि डायमीटर ता बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए कॉर्ड एंड ए डायमीटर इज दैट कॉर्ड ता कोन होची कोनसी भी दीटा पॉइंट रो टच करले ताको हम कॉर्ड कहूची डायमीटर भी सेटा दीटा पॉइंट बाउंड्री लाइन रो दीटा पॉइंट को टच करले ताको कहबा हम कॉर्ड बट इफ दैट पासेस थ्रू द सेंटर एटी जो सेंटर अछि मो नेम दे देली ओ ए सेंटर रो जदी पास कला से कॉर्ड ता ताको हमें कहबा डायमीटर और वी कैन से दैट एनी कॉर्ड दैट passes through the center of the circle is called the diameter ओके सो हमें जदी देखिबा एठी ए ओ पॉइंट रो ए साइड रे धरि नंतु एठी अछि पॉइंट पी आ एठी अछि पॉइंट क्यू हमें ए ऊपर देखि दिले जे ओपी हबो गोटे रेडियस सिमिलरली ओक्यू इज आल्सो ए रेडियस सो वी कैन से दैट
any diameter d, its length will be 2 into length of the radius. एटा हमें ऑलरेडी नोन फैक्ट गुडा ठीक अछि। नेक्स्ट एठी आपण देखुथिबे लेखा है सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस माने कोन? एटा जो सर्किल अछि, सर्किल रो बाउंड्री को ब्लैक कलर रे एठी मार्क करा है, that is called circumference. That means the boundary line, the length of the boundary line is called circumference of the circle. जेमती हमें ट्रायंगल हला कि क्वाड्रिलेटरल हला सेतरे पेरीमीटर बाहर करू जे एठी हमें सेमती ताको कहू जे सर्कमफरेंस, the length of the boundary of the circle। ठीक अछि। नेक्स्ट एटा तो हमें जानि जे सेंटर। सेंटर कोन? सेंटर टा हला गोटे सर्किल रो पूरा मझी पॉइंट जोटा ताकू कहू जे हमें सेंटर ऑफ द सर्किल। नेक्स्ट हियर दिस इज आर्क। व्हाट इज एन आर्क? सपोज मु एठी पॉइंट ने गली ए, सर्किल रे एठी गोटे पॉइंट ने गली बी, तो ए बी पॉइंट को कनेक्ट करिया पई जो सर्किल रो गोटे पार्ट, ए जो ब्लैक कलर रो गोटे पार्ट यूज हे जे ताकू कहिबा हमें आर्क। सो व्हाट इज एन आर्क? आर्क इज ए पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल। ठीक अछि। तो ए बी दीटा पॉइंट रो ए लेफ्ट साइड रे एटा गोटे आर्क क्रिएट हेजी और राइट साइड रे एटा गोटे आर्क क्रिएट हेजी। तो ए आर्क टा कोन अछि? राइट साइड रो आर्क टा दिस इज लॉन्गर देन द लेफ्ट साइड आर्क। सो याको हमें कहिबा मेजर आर्क। कोन कहिबा? मेजर आर्क। आ ए जो लेफ्ट साइड टा को कहिबा हमें माइनर आर्क, बिकॉज़ दिस वन इज हैविंग स्मॉलर लेंथ। ओके। नेक्स्ट आमे एबे आर्क आउ रेडियस को नेकी गोटे जिंस क्रिएट करबा, आउ आर्क आउ कॉर्ड को नेकी गोटे जिंस क्रिएट करबा। तो फर्स्ट आमे देखिबा एठी सेक्टर अछि। सेक्टर माने कोन? एटा जो आपनकर एटा धरनंदु पॉइंट हला P एंड दिस पॉइंट इज Q। तो ए PQ पॉइंट को कनेक्ट करले जो सर्किल रो सर्कमफरेंस रो पार्ट याकू कहू जे हम कोन? आर्क। ए आर्क रो एठी जदी मोर अछि O, तो OP रेडियस आउ OQ रेडियस आउ तार करस्पोंडिंग आर्क भितरे जो रीजन डाटा क्रिएट हला एनक्लोज्ड रीजन, दिस एनक्लोज्ड रीजन बिटवीन these two radius and the corresponding arc is called a sector. So एटा जदी गोटे सेक्टर हला, ए आरो पार्ट एटा भी गोटे सेक्टर हबो ए रीजन टा हला, बट ए रीजन टा ए ब्लैक पार्ट अपेक्षा बड़ अछि, तो याको हमें कहिबा मेजर सेक्टर। कोन कहिबा? मेजर सेक्टर। आउ ए ब्लैक पार्ट को कहिबा हमें माइनर सेक्टर। ओके। नेक्स्ट सेगमेंट। सेगमेंट माने कोन? सेक्टर भलिया ही गोटे जिंस एटा, बाकी एथरे कोन अछि देखो मु आगरो एठी नेम दे दोजी P और एठी नेम दे देली Q। ठीक अछि। सो PQ गोटे कॉर्ड एटा, PQ इज ए कॉर्ड, PQ इज ए कॉर्ड एंड दिस इज एन आर्क, दिस इज एन आर्क। तो एक कॉर्ड और तार करस्पोंडिंग आर्क भीतर जो रीजन टा क्रिएट हिजे ताको कहया हमें सेगमेंट। कोन कहबा? सेगमेंट। सो सेगमेंट इज द रीजन in the interior part of the circle that is enclosed between a chord and its corresponding arc। सेमती केतरा एठी सेगमेंट क्रिएट हला दीटा, दिस स्काई पार्ट एंड दिस ब्लैक पार्ट। स्काई पार्ट टा टिके देखिले बड़ देखा जाउची माने बड़ अछि, तो याकू कहबा हमें मेजर सेगमेंट आउ ब्लैक पार्ट को कहबा हमें माइनर सेगमेंट। ठीक अछि। तो एटा किछिटा थिला हमर टर्मिनोलॉजी फॉर सर्किल जोटा हमें ऑलरेडी पढ़ी छी। नेक्स्ट बट व्हाट इज न्यू इन दिस सेक्शन? ओके। आमे एठी किछिटा फिगर देखि पारिबा। हियर टू व्हील्स आर देयर दैट आर अटैच्ड विथ टू वेयर और थ्रेड। ओके। एठी जदि आमे देखिबा कोन है जी ए सर्किल रे टच हे कि ही ए ऊपर थ्रेड टा पळै जेमती हला, सर्किल रे टच हे कि ही ए थ्रेड टा पळै ए तळे भी सेमती हे। एठी देयर इज ए एथलीट हु इज थ्रोइंग द डिस्कस। डिस्कस थ्रो रे से पार्टिसिपेट करि जी आ से कोन करि जी डिस्कस को एमती सर्कुलरली से ताको घुरेबा परे ए पॉइंट रे से कोन कला डिस्कस टा को थ्रो करो। You people have already accustomed with discus throw in school level। discus throw होउछ, तो discus throw रे जेतेबेले से एमती थ्रो करूची कोन होउची गोटे इमेजिनरी सर्कुलर
पाथ गोटे क्रिएट हिची एटा आ एई पॉइंट रो कोन हिची एटा गोटे स्ट्रेट लाइन रे एटा आकु पळेला तो गोटे पॉइंट रे एई जिंसटा टच हिची हां कि नहीं ए जो लाइन टा सर्किल टा हला तो एई टाइप रो लाइन विषय रे हमें एई सेक्शन रे पढिबा जेमति एटा देखो ए बाइसाइकिल इज ऑन द रोड गोटे बाइसाइकिल रोड ऊपर ठिया हैची माने जणे राइड करूची तो देखो एई बाइसाइकिल रो व्हील टा को शेप रे अछि सर्कुलर शेप रे ऑब्वियसली हला और रोड को जदि हम गोटे स्ट्रेट लाइन आकार देखिबा ए व्यू रो देखो ए पॉइंट रे एटा टच हिची आ कोनोसी पॉइंट रे भी टच हेनी सर्किल तो एई टाइप रो लाइन विषय रे हमें पढिबा एई लाइन को कोन कहू जो हमें टेंजेंट लाइन कोन लाइन कहू जो हमें टेंजेंट टेंजेंट टू ए सर्किल ता माने कोन एम्प्टी लाइन दैट टचेस द सर्किल ओनली वंस थरे ही कोन करथबो सर्किल को टच करथबो आउ पळै जाउथबो ताको कहबा हमें टेंजेंट ऑफ द सर्किल ठीक अछि देखो टेंजेंट को भल से पढिया पई हमें आउट के बुझी नेबा जे कोनोसी गोटे लाइन जोटा सर्किल रो बाहर ओरिजिनेट हिची आउ से सर्किल सह कोन कोन रिलेशन रही पारिबो ठीक अछि सो वी ऑलरेडी नो दैट if there is a circle it divides the plane of paper into three parts एटा जो बाहर आपनकर रही गला एटा हला exterior part this one is exterior part this one is interior part this one is interior part and this is boundary line एटा कोन boundary line हला सपोज एटा देखो pq गोटे लाइन अछि बाहर exterior part रे and it pass through the circle but remain untouched माने कोन होउची remain untouched माने कोनसी भी पॉइंट रे टच इन देखो एते गैप अछि मझी रे टच हेइन तो हमें कोन कहबा दिस लाइन इज कोन कहबा दिस लाइन इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करून माने नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ठीक अछि नेक्स्ट नाउ इन द सेकंड फिगर वी कैन सी दैट this is a circle and this is a straight line this line here it is point p here it is point q okay a pq point ता कोन होउची ए pq point ता ए सर्किल रो भितरु पास करूची सर्किल रो भितरु पास करूची देखो एमती एटा पॉइंट ए रे ए सर्किल को से टच कला आ भितरु पॉइंट बी रे आउ थरे टच कला आ पुनी बाहरी गला पॉइंट q आड़ तो कोन होइची दिस स्ट्रेट लाइन intersected the circle into two points केतरा पॉइंट्स रे इन 2 पॉइंट्स रे केतरा पॉइंट्स रे 2 पॉइंट्स रे तो ए भलिया स्ट्रेट लाइन को pq को आमे एठी कोन कहिबा इट इज ए सेकंड बिकॉज़ इट intersects the circle into in how many points in 2 points namely a and b तो दुई थर इंटरसेक्ट करले ताको कहबा आमे सेकंड okay now look at the third figure here this is the circle obviously and this is the straight line pq when it passes near to the circle it just touches at a fixed point a fixed point रे कोन होची ए सर्किल टा टच करिकि पळौची तो केतेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहला वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहिला ताकू हमें कोन कहबा टेंजेंट लाइन ताकू हमें कोन कहबा टेंजेंट लाइन ओके सो between an exterior line and a circle how many relationships can be established here you can see that there are 3 relations what are they in the first case it may not intersect and go as usual in the second case it may intersect but at 2 points and in the third case it intersects or it touches at just 1 point so 1 point intersection line is called tangent the line that intersects 2 points at 2 points are called secant ठीक अछि तो नेक्स्ट हमें देखिबा गोटे सेकंड आउ कॉर्ड विषय रे भितरे कोन रिलेशन अछि सेकंड वर्सेस टेंजेंट एंड सेकंड एंड कॉर्ड एई विषय रे हमें देखिबा देखंतु एबे दिस इज ए सर्किल एटा धरिनंतु पॉइंट हला p एठी गोटे पॉइंट अछि q
तो PQ जो टोटल ए PQ को कहबा हमें कोन गोटे सेकंड कहबा PQ इज ए second because this is an exterior line that intersects the circle in 2 points. Let this point is A and this point is B. तो AB दीटा पॉइंट एमतिया जो थरे कि ए सर्किल रो बाउंड्री लाइन रे अछि जहा कि ए PQ सेकंड टा कट करूछ तो आमे PQ को कहबा सेकंड बट ए रु बी जाए जो ए सेकंड रो पार्ट रहिला ए जो ऑरेंज कलर रे मार्क कराई याकू कहबा हमें कोन कॉर्ड बिकॉज़ दिस इज फॉलिंग इनसाइड द सर्किल याकू कहबा हमें कॉर्ड कॉर्ड रो हमें डेफिनेशन कोन जानि जे दिस इज द लाइन दैट touches or that connects any two boundary points of the circle. Okay, so हमें कहबा जे कॉर्ड रो गोटे अपग्रेडेड वर्जन हला सेकंड हला तो कॉर्ड इज ए पार्ट ऑफ द सेकंड. ओके नेक्स्ट टेंजेंट तो एठी अछि जोटा थरे टच कला ताऊ कहबा हमें टेंजेंट. ओके नेक्स्ट हमें देखिबा ए जो टेंजेंट और सेकंड कथा हमें पढुची आर द टेंजेंट्स सेकंड्स टू सब टेंजेंट जो अछि से माने सेकंड्स रो भी प्रॉपर्टी शो करूचंदी कि देखो हियर देयर इज ए सर्किल and so many parallel lines are running within the circle. Okay, these are the parallel lines. जदि मु एठी गोटे पॉइंट एटा नै गली धरनियंतु this point is P and this point ए पॉइंट हला Q. तो PQ जो अछि एठी जदि अछि A पॉइंट रे सर्किल को टच करूची आउ एठी B पॉइंट रे ए सर्किल को टच करके गला. सो PQ इज ए सेकंड जेतले मो यार पैरेलल लाइन कोटे एठी नै जिबी सपोज दिस पॉइंट इज A डैश एंड दिस पॉइंट इज B डैश लाइकवाइज ए जो ए पॉइंट को मो धरन नै गले A डबल डैश आ ए पॉइंट को नै गले मो B डबल डैश. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट AB रो जो लेंथ ता सेटा A डैश रु B डैश रो लेंथ अपेक्षा टिके लॉन्गर हो सेमदी A double dash ru B double dash जो ए लेंथ ता अछि दिस विल बी स्मॉलर देन AB. तो कोन होउजी AB रो लेंथ ता धीरे धीरे बाउंड्री साइड को आसिला बेल को कोन होउजी तार लेंथ कमी जाउची. द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB गेटिंग शॉर्टर एज वी क्लोजेस्ट टू द बाउंड्री लाइन. ओके आ धीरे धीरे जेते बेले ए जो पॉइंट A और पॉइंट B धीरे धीरे आसी कि गोटे पॉइंट रे मर्ज कर जीवो सपोज ए पॉइंट मर्ज कर गला याकू हमें कहूचे धरनियंतु ए पॉइंट हला हमर x. सो याकू हमें एबे कोन कहिबा दिस इज ए टेंजेंट आ सेटा सेकंड हे कि रहिला कि नहीं सेटा हे गला एबे टेंजेंट. सो वी कैन से दैट टेंजेंट्स आर ए स्पेशल केस ऑफ सेकंड. वो जगह स्पेशल केस हेबे जेतेले ए जो दीटा पॉइंट मर्ज हेगी गोटे पॉइंट रे रही गला किंबा ए जो दीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जदी कोइंसाइड करी गला ताकू कहिबा हमें सही लाइन को एबे हमें कहिबा टेंजेंट. सो वी कैन से टेंजेंट्स आर ए स्पेशल केस ऑफ सेकंड. ओके बुझी गला. नाउ हमें तो पढ़िले टेंजेंट सेकंड ठीक अछि. हमें एबे देखिबा जे व्हाट इज ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जेमते कि as it is already understood by its English meaning also that is point of contact. So a point where the contact is made hala जेमते कि this is a bicycle it has a circular shape this is the straight line or the road एटा को एई पॉइंट से टच कला ए पॉइंट रो नाम दे देली P. तो P को मु कोन कहबी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जेमते कि ए फिगर रे आपण माने देखंतो सर्किल अछि एठी अछि पॉइंट P एठी अछि पॉइंट Q PQ टा हला गोटे टेंजेंट दैट टचेस द सर्किल एट पॉइंट A. तो पॉइंट A को हमें कोन कहिबा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिकॉज़ दिस इज द पॉइंट वेयर PQ टचेस द सर्किल. ता छोड़ दा कोनोसी पॉइंट नाही आउ जदी कोनोसी पॉइंट रे टच करू थांदा तो हमें ताको आउ टेंजेंट थोड़ी कहिबा सेटा हे जिवो कोन सेकंड हे जिवो.
ओके सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सो टेंजेंट्स को लेकी आमे दीटा थ्योरम एबे पढ़ी ओके सो फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट द टेंजेंट्स at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact तो कौन सी भी आम मैथमेटिकल स्टेटमेंट पढ़ुचे कौन सी थ्योरम पढ़ुचे एक्सियम पढ़ुचे वी नीड टू रीड इट प्रॉपर्ली माने कौन जे एमती आम पढ़ा जे आम से की वर्ड्स गुड़ा धरी पारिबा जेमती कि देख एठी लिखा है द टेंजेंट्स तो कौन द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर एटा हला गुटे की वर्ड्स परपेंडिकुलर टू रेडियस टू व्हाट टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यार की पॉइंट मान को मु एबे देखो मार्क कर देछि सो आमे जदी याकू पढिबा ए की पॉइंट्स को जदी खाली उठेबा then also we can understand what does the theorem mean जेमति कि एठी लिखा है the tangents at any point of the circle is perpendicular to what to the radius through the point of contact ता माने कोन आमे फर्स्ट ए फिगर बुझिबा तापर आमे प्रूफ पार्ट को जिबा suppose this is the center of the circle let us name it a okay let us name it O okay and here let this point be P so what is P we already know that this point is called point of contact a point को कौन कहा जाउची point of contact so as per this theorem the radius OP will be perpendicular to the टेंजेंट ए जो टेंजेंट अछि ए टेंजेंट को ए ओपी टा कोन हबो परपेंडिकुलर दैट मींस बिटवीन द रेडियस ओपी एंड दिस टेंजेंट देयर विल बी ए 90 डिग्री केते डिग्री रहिबो 90 डिग्री रहिबो कोठी ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ठीक अछि लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई एटा तो होजी दिस इज ए स्टेटमेंट और ए थ्योरम बट हाउ कैन वी से दैट this is true we have to prove it so देखो एठी गोटे सर्किल अछि सेमती जहार सेंटर एठी लिखा है O आउ P टा हला कोन P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जेमती कि एठी गोटे XY एटा Y लिखा है एटा अछि X XY गोटे टेंजेंट जोटा P पॉइंट रे टच कर जे सर्किल को सेथि पे हमें P पॉइंट को कोन कहू जे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओके now you can see there is another point Q is there okay जदि मु सेमती एठी आ गोटे पॉइंट नै गली सपोज ए पॉइंट ना हे गला S हला ए पॉइंट ना हला S Q गोटे पॉइंट कोन Q is a point that lies on the tangent XY S is also similarly a point that lies on the tangent XY जेतेले मु O को Q सह कनेक्ट करूची देखि पारुथिबे एटा ए पॉइंट रे कोन होई सर्किल को क्रॉस करके गला ए पॉइंट रो ना धन्य दे दिली मु ए हला सो यू कैन क्लियरली सी दैट OA will be equal to OP because both of them are radii of the circle radii माने कोन प्लूरल ऑफ रेडियस radii of the circle and we know that radius is fixed so OP रो लेंथ जहा OA रो लेंथ भी सेया ही हबो नेक्स्ट OQ रो लेंथ कोन हबो OA प्लस AQ हबो OA प्लस AQ देखा जाउची ए जो AQ टा एठी एक्स्ट्रा अछि तो AQ प्लस OA हला OQ दैट मींस ऑब्वियस कथा एटा जे OQ विल बी लॉन्गर देन OP हां कि नहीं सेमदी मु जदि आ गोटे कोनसी पॉइंट एठी S जेमति नै जाईची OS भी कोन हबो ग्रेटर देन OP हबो कोनसी पॉइंट नै जाओ एठी मु आ गोटे पॉइंट नै गले धन्य R तो ए जो OR हबो OR will be greater than OP that means you can see that any point you take on the tangent the distance from the center to it will be longer than the distance to P or OP ठीक अछि
So we can say that OP is the shortest distance between कौन between center of the circle and the tangent and we know that कौनसी भी गोटे लाइन रु जदि आम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गोटे पॉइंट को कि आ गोटे लाइन को ड्रॉ करने को चाहूचे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर हो कि नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट and shortest distance is always perpendicular. So in this way we can say that OP is perpendicular on x y okay nahi अब को पॉइंट रे एटा परपेंडिकुलर होचे दैट मींस को पॉइंट रे एटा 90 डिग्री क्रिएट करूचे पॉइंट P रे एंड व्हाट इज पॉइंट P पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सो एठी हमर प्रूव हे गला जे द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज perpendicular on the tangent at the point of contact बुझी हे गला एटा थिला हमर फर्स्ट थ्योरम तापरे हमें सेकंड थ्योरम विषय रे देखिबा तो सेकंड थ्योरम पई किछि हमको एक्स्ट्रा नॉलेज दरकार सेटा हमें फर्स्ट देखिबा कोन कोन हमको दरकार सो वी विल स्टडी हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर इन ए सर्किल एटा भूल अछि ए जगह रे एटा कोन हबो सर्किल हबो कौन हम सर्किल ठीक अच्छे सो हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर इन ए सर्किल तो देख एठी अछि पॉइंट P ए सेकंड फिगर रे बाहर अछि पॉइंट P आउ थर्ड फिगर रे सर्किल बाउंड्री रे अछि पॉइंट P ओके सो मो तीनटा केस नै जाईछि आउ देखिबी जे केतेटा टेंजेंट क्रिएट होछि सो व्हेनेवर आई हैव ए पॉइंट P in the interior part of the circle then you can see we cannot draw a tangent from this point because कौनसी भी लाइन मु ड्रॉ करिवि that will be a second हां कि नहीं that will be a second so ए केस रे no tangent हबो केते हबो no tangent हबो हला सेमदी सेकंड केस देखो P पॉइंट ता कोठी लाए करूजी P पॉइंट लाइज on the exterior part of the circle आ ए पॉइंट रो जदी मु टेंजेंट ड्रॉ करिवि दीटा टेंजेंट होची देखो एटा हला पॉइंट T1 रे टच करूची आ एठी पॉइंट T2 रे टच करूची तो PT1 दिस इज ए टेंजेंट एंड PT2 दिस वन इज ए टेंजेंट बाकी मु P पॉइंट रो किछि भी लाइन ड्रॉ करबी सब कोन होई जिवो गोटे गोटे सेकंड होई जिवो आइदर सेकंड हबो किंबा दैट विल गो नॉट इंटरसेक्टिंग द सर्किल ओके सो हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल फ्रॉम ए external point of the circle two tangents are possible in the third figure if you see then P lies on the boundary of the circle अब ए पॉइंट रो केतेरा टेंजेंट क्रिएट हे पारुची देखो गोटे ही टेंजेंट क्रिएट होउची केतेरा टेंजेंट क्रिएट होउची गोटे ही टेंजेंट क्रिएट होउची नाउ आमे तो पढिले टेंजेंट विषय टेंजेंट तो गोटे इनफाइनाइट लाइन हे पारे कहा को हमें लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहिबा टेंजेंट रो लेंथ कोटा को मेजर करबा सेटा हमें देखियो देखो सपोज दिस इज एन एक्सटीरियर पॉइंट हमें जानिले जे गोटे एक्सटीरियर पॉइंट रो एका गोटे टेंजेंट ड्रॉ करी हबो तो एई पॉइंट रो केतरा टेंजेंट ड्रॉ करी हबो दीटा टेंजेंट गोटे T1 रे आ गोटे T2 रे टच करिवो सो ए जो P रो T1 जाय जो लेंथ अछि एटा को कहिबा हमें लेंथ ऑफ द टेंजेंट एटा भी आओ एटा भी कौन कहिबा दीज आर लेंथ ऑफ द टेंजेंट दैट मींस व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट between the exterior point from where it originates and the point of contact तो जेहेतु आम एठी पढ़ू जे लेंथ ऑफ टेंजेंट विषय रे एंड हियर आई से दैट PT1 is also length of the tangent
PT2 is also length of the tangent. Then you must say that PT1 and PT2 both should be equal. हाँ कि नहीं नहले लेंथ कोन सब टेंजेंट पे गोटे टेंजेंट पे कोन लेंथ अलग अलग हबो नहीं. So length of the tangent is same for the two point of contact जहाँ को कि हमें एबे प्रूव करियो. देखो ए थ्योरम रे कोन लिखा है जी the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. जोटा कि मु एबे कहली तो यार की पॉइंट्स हम कोन देखिबा length of the tangent drawn from the external points to a circle are equal. तो हमें केमती प्रूव करबा देखो this is the point P, this is the center of the circle O. Let from the external point P there originates two tangents PQ and PR. Let from the point P originates two tangents PQ and PR. We need to prove that हमें कौन प्रूव करबा एठी to prove कौन PQ is equal to PR. We have to prove. Okay. So देखो केमती हमें प्रूव करबा देखो आमे जदि ए दुई ट्रायंगल को कंपेयर करिबा इन ट्रायंगल OQP and triangle ORP, what can we say? OQ will be equal to OR. How sure because these two are radii of the circle. Okay nahi OQ और OR both are the radius, so they will be equal. Next OP is common side. OP टा कौन common side between these two triangle. OP जो length टा एटा कौन अछि ए दु triangle common अछि हाँ कि नहीं. And we can also say that OQP angle is equal to angle ORP. These two angles are also equal because now only we have proved that the radius at the point of contact to the tangent is perpendicular or makes 90 degree. So both are both are 90 degree. So here you can see that this is a side, this is a side, and this is the right angle. So by which criteria? By RHS criteria. By RHS criteria कौन हबो triangle OPQ is congruent to triangle OPR. Triangle OPR. So by CPCT, what is CPCT? Corresponding parts of congruent triangle, they must be equal. So कौन equal हबो एठी PQ will be equal to PR and एटा ही हमको प्रूव करियार थिला. So PQ will be PR. So we can say that the lengths of the tangent drawn from an external point to a circle are equal. ठीक अछि. So P point रो Q point जाए कौन हबो जो लेंथ रहिबो सेटा P रो R जाए लेंथ जोटा अछि ता सह इक्वल हबो. ठीक अछि. So basically these two theorems are there in class 10 and it is over for the theory part of this class 10 syllabus for circle. Okay, so in another video we will discuss about the exercise question in the NCERT and some other question.